Okay, so yesterday we were discussing about the maximum available phase. So I will today I will show you how to find out if you don't know formula, because I am not very good in the mugging the formula. So how to find out the maximum phase and the lowest phase. So we will drive the formula. Okay. So suppose this is the two heading. Okay. So if we have a two heading, then the maximum phases, available phases are 1, 2, 3 and 4. So maximum phase are, ठीक है. Or if someone asks how much minimum number of the phases, then we will count it as a one phase. Again count 1, 1. I will draw a other diagram so you will not confuse. In the minimum case, we will consider this as a one phase. So how much phase? 1, 2 and 3. If they ask us the minimum phase, then the अगर मान लो दो हेडिंग दी जाए तो मैक्सिमम फेज के लिए क्या करेंगे, सबको सेपरेट मानेंगे. तो 1, 2, 3, 4. तो मैक्सिमम फेज विल बी 4. अगर बोले कि दो हेडिंग में मिनिमम फेज कितना है, तो इन दोनों को हम एक मानेंगे. 1, 2 and 3 मिनिमम फेज. एंड इफ अगर अपने पास तीन हेडिंग है, 1 हेडिंग, 2 हेडिंग and 3 heading, then the maximum and minimum headings. So maximum faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. और अगर similarly for the 3 headings, if he asks us minimum phase, then we will consider this as a one phase and count it again. So in this case 1, 2, 3, 4 and 5. So minimum phase will be 5. So if we know the two equation and two unknown, we can find our equation. So in this case, the formula will be for the maximum, for the maximum phase, let 2 a n plus b equal to maximum phase. Okay, let this formula. So we have to find out the value of a and b. Okay, so for the two unknown, we can find, if you want to find out two unknown, then you need two equation. तो इसमें क्या करेंगे, कि फर्स्ट
ए एन प्लस बी इक्वल टू मैक्सिमम फेस कंसिडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट टू हेडिंग वाला केस लेते हैं। उसमें कितना आया मैक्सिमम फेस? मैक्सिमम फेस आया था 4, तो टू हेडिंग बराबर 4। और अगर 3 हेडिंग मान रहे हैं, देन 3 प्लस बी इक्वल टू 7। 1 2 3 4 5 6 7, so a equal to 3 and b equal to -2. So our formula for the maximum phase will be 3n -2. For the minimum phase, again we will do the similar practice. So an plus b equal to minimum phase we will consider, and the value of the two heading of minimum phase in the two heading. So a of 2 plus b, which what is the value? 3, and a 3 plus b equal to 5. Here we will get a equal to 2 and b equal to -3. So for the minimum phase, our formula is 3n minus 3. So now we can find out the answer of this question. Yesterday I was wrong because I study in a, one of my friend told me his rank was good, so that was my mistake. I should research on it. Okay, now you have understood how to find out the maximum and the minimum. Okay, yes. I have made mistakes. Maybe I have calculated wrong. Where is my question? Please find out the A and B value. So A value is 2 and B value to do 4 -1. So it will a minimum phase value. Please remember these two formula. Just solve the problem, sir, for a better understanding. Okay, explain it again. Okay, I will explain again. One time, है ना? ध्यान से देखो भाई, थोड़ा मैं हिंदी में बोलता हूँ, है ना? थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगा। देखो, मान लो आपको 2 हेडिंग दी गई है, ठीक है? ये एक हेडिंग, ये दूसरी हेडिंग। अगर 3 हेडिंग बोले तो ऐसे बनता है उसका डायग्राम। If they ask us that 4 heading, then the diagram will be like this. If they ask us 5 heading, okay, so if the maximum
maximum faces they've asked, then count 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. For this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Similarly, you will do for this equation. Now, if they ask us minimum heading, then for the minimum heading, we will consider this as a one phase. And now calculate. So 1, 2 and 3 minimum phase. For this 1, 2, 3, 4 and 5. These are the minimum phase. But ये चीजें क्या है यार, 2 हेडिंग 3 हेडिंग तक तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर मान लो कभी बोल दे फॉर कैलकुलेट हेडिंग गिवन 8, देन ऐसे कैलकुलेट करना टफ हो जाता है एक इंडिविजुअली. सो वी ड्राइव द फॉर्मूला. सो फॉर फॉर्मूला टेक this for first for the maximum and consider this as a minimum. Okay, we have a 2 unknown in both the equations, so we need the 2 value, 2 equation, 2 unknown. We can solve our 2 unknowns. तो पहली बार में 2 हेडिंग 2 सेकेंड और थर्ड ले लेंगे, उनसे वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, वहां से ए और बी निकलेगा. फिर वापस मिनिमम वाला केस लेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे. ठीक है. अब अगर फिर भी नहीं समझ में आया ना भाई, हाउ टू कैलकुलेट नंबर इफ द नंबर ऑफ द फेसेस आर 5. अच्छा, so now if the face given us 5, but you have not said is the minimum face or maximum face, then how we will? So we will come to our questions, yesterday questions. So this was our first question. Again we will solve. So in this question, so maximum face number of the faces available, 5 heading given. Okay, so our formula for the maximum heading we have already derived, or you can, if you forget the formula in the examination, then first go with the basic. Okay, now calculate each individual. So maximum for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 will be the answer. Okay, otherwise you can use your formula 3n minus 2. So when we put the value of 5 minus 2, 5 3 15 minus 2, you can find 13. Okay, in this question
So if he has given us the maximum number of the faces, face given 13, okay, then maximum face we already we know that it should be 3n minus 2. So when we have no maximum phase, 3n minus 2, 3n equal to 15, n equal to 5. One T. So answer given 12, but actual answer is 13 according to the formula. Brother, yesterday I was also confused, so I used that formula, but I have read two three from ask from my 2 3 friends and read a book, so I got this formulas and calculation. So I will also clarify again, so till now you can remember this process, and I will, if I get any information, I will also share with you. ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं यार, बहुत 20 मिनट लग गया है ना, क्योंकि आई हैव टू टेल यू सम ट्रिक्स एंड देन सो आगे बढ़ना, ऐसे तो ओके गोरे होगा ही नहीं पूरा। और कभी भी है ना, जैसे मान लो कि आपको लगता है कि एक दो क्वेश्चन में हम उलझ गए हैं या नहीं आ रहा है या प्रोसेस गलत है या क्वेश्चन गलत है, गलत आंसर पता चल गया है, सो लीव दैट क्वेश्चन एंड आगे बढ़ो, है ना, क्योंकि एग्जाम में इससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकता है कि आपका आपने कितने क्वेश्चन नहीं किए या कौन सा सिलेबस छोटा सा आपने छोड़ दिया है। आपने जितना अगर 80% सिलेबस पढ़ा है, अगर आपने वो ही अच्छे से किया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो आपको फोकस ये करना चाहिए कि जैसे ये चीज ठीक है, पर जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, उसका आंसर आपको नहीं पता चल रहा है या नहीं निकल पा रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो उस चीज को वहां छोड़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा ट्राई करो, 1 या 2 बार 3 बार ट्राई करो, नहीं हो रहा तो आप छोड़ो, आगे बढ़ो, बाकी चीजों को करो, उस पे बाद में वापस आएंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस सेम, कंटिन्यूस सेम मीन्स, देखो अगर 2 सीम है, अगर इन दोनों के बीच का पार्टिंग जो है 9 मीटर से कम है, इफ द पार्टिंग बिटवीन बोथ द सीम is less than 9 meter, then we say it continuous seam. Okay, so today I want to tell you about the type of seam. Okay, so because this theory section you have to read DJ Deshmukh volume 1 for the explosive, drilling and blasting, volume 1 chapter 8. So for explosive, drilling, blasting, and I have seen that few down recorded classes already uploaded on your channel, so try to finish as soon as possible. Otherwise uh, if the live or revision class will happen and it's beneficial for you in the examination, till the management will you let you know what is their procedure, I don't know about it, but you should focus on yourself, because if it is 2 or 3 months, so you should go faster. So already some recorded class I have seen on your platform, so you should watch DJ Deshmukh volume 1 chapter 8, otherwise read by yourself, so you will get basic information about explosive, drilling, blasting. Okay, so type of coal seam, I am taking this chapter. टाइप ऑफ कोल सीम हम 3 टाइप से पढ़ेंगे।
we will study first based on thickness, and first type, second type is based on gradient, third type based on degree. So based on the thickness is basically four types. First, thin seam, second is moderate thick seam, then thick seam, and very thick seam. अगर तुम्हारा थिक सीम जो है वो अगर 1.5 मीटर से लेस है, लेस देन 1.5, देन वी कॉल इट थिक थिन सीम. अगर 1.5 से 4 मीटर का है, 4.5 होगा शायद, देन वी कॉल इट मॉडरेट थिक सीम. और अगर वो 4.5 से 9 मीटर का है तो वी विल कॉल इट थिक सीम. और वेरी थिक सीम कंसिडर एज ए मोर देन 9 मीटर. ठीक है. एंड सेकेंड इज द बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट. बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट पहला तो होता है फ्लैट सीम, फिर होता है इंक्लाइंड सीम, एक होता है स्टीप सीम, और एक होता है वेरी स्टीप सीम. सो फ्लैट सीम मीन्स द डिग्री gradient should be 5 degree से less than 5 degree. So flat कब होगा? Gradient of the seam is less than 5 degree. Inclined कब होगा? Inclined seam कब होगी? If 5 degree to 18 degree, or if the steep seam 18 degree to 40 degree. Very steep seam beyond. So if this is your seam, it is the gradient theta. So this third type is based on the degree. You all should know based on the degree the type of the seam is 3. Degree 1, degree 2, degree 3. For the degree 1, we make a sarni or table based on the inflammable percentage of inflammable gas. In general body है ना, और rate of emission. So अगर डिग्री 1 है और अगर जनरल बॉडी में इन्फ्लेमेबल गैस बिलो 0.1% है तो वी कॉल इट डिग्री 1. अगर बिलो मोर देन 0.51% है तो वी कैन कंसिडर एज ए डिग्री 2 और डिग्री 3. देन डिफरेंस बिटवीन डिग्री 2 एंड डिग्री 3, रेट ऑफ इमिशन. रेट ऑफ इमिशन के बेस पे हम डिग्री 2 एंड डिग्री 3 में डिवाइड करते हैं. फॉर डिग्री 1 रेट ऑफ इमिशन कितना होता है? बिलो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है ना. फॉर डिग्री 2 के लिए होता है ये 1 से 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड. फॉर डिग्री 3 अबव 10 मीटर क्यूब
पर सेकेंड। ठीक है, ये 3 टाइप से हमने देखा कि बेस्ड ऑन द थिकनेस, बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट, बेस्ड ऑन द डिग्री। ठीक है, ये हमने सीम का डिवाइडेशन देखा। चलो आगे चलते हैं, आगे न्यूमेरिकल पे। वी शुड फोकस ऑन न्यूमेरिकल। बताओ बताओ, कमेंट इफ यू वांट टू सोल्व इट। यू हैव 10 सेकेंड। प्लीज कमेंट। Try to understand. I cannot cover whole theory of DJ Desmukh 1, 2, 3. My job is only to solve the numericals of your AK Gorai. I am giving you the information, so you should think like that, how to uh, revise your syllabus. I told you that we have uh, completed chapter 1 and we are on the numerical part, so you should complete your chapter 8 volume 1 DJ Deshmukh, in which they have mentioned explosive, drilling, blasting in detail. चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो विश्वजीत जी ने आंसर दिया है 625। चलिए ट्राई करते हैं ना। हाउ यू विल सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो, he has given us the nominal firing time, 40 मिली सेकेंड। मतलब इतना तो लगना ही है, फर्स्ट जो भी फर्स्ट ब्लास्ट होगा उसमें 40 मिली सेकेंड है। एंड ये बोला कि 10 सर्किट है। सो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर, ऐसे करके अपने पास 10 सर्किट है। सो आई एम नॉट ड्रॉइंग एग्जैक्ट डायग्राम, ओके, but I am giving that first it is 40. So nominal firing time is, so we call it a first circuit fire, है ना। So next firing take place in 25 millisecond ना। Or you should remember this fact also. For the detonator, 25 millisecond is the, so for the next it will be 25, तो इतना आएगा। And for next 25.25। तो ऐसे तो हम करेंगे नहीं ना, ऐसे करते जाना है, ऐसे ऐसे करते चलना है। But for this, we have to solve in this examination, so we will not go like this. एग्जाम में सोल्व करना है तो फर्स्ट सर्किट टाइम हमको पता है कि 400 एंड 10 सर्किट करना है ब्लास्ट। तो पहला सर्किट तो इसमें हो गया, बचे कितने, 9 सर्किट। 9 इंटू 25। सो 400 प्लस 25, 25 200, 25 नमक है 225, तो ये आ जाएगा 625 मिली सेकेंड। ठीक है,
देखो ये भी ब्लास्टिंग से आया है. टुडे प्लीज गो एंड रीड वॉल्यूम 1 चैप्टर 8. शॉक ट्यूब ब्लास्टिंग से रिलेटेड है ना. सो ही इज सेइंग दैट शॉक ट्यूब initiating system such as nonal. What is nonal? Please comment what is nonal. Nonal is non electric detonator. Okay. So the nonal shock tube initiating system nonal, it does not need detonator for initiating. Nahin, we need a detonator. It can be used in the underwater. No, it is not affecting with the static electricity and strong currents. True, we do it not affected. Noise नहीं होता है. नहीं होता है नोनल से. Okay, go and read. I have seen in your, I have downloaded PDF also. So the type of explosive they have in one of your class, and delayed detonator nonal. They have mentioned nonal. This is safety fuse. Everybody know. Okay. So go in your classes and watch. Otherwise, take your volume 1 and read it. Should I tell you about the material in the explosive? Okay, I will teach you little bit related to explosive. देखो material in explosive. First material, combustible matter. कंबस्टिबल मैटर में क्या क्या होता है? जैसे मान लो वुड हो गया, लकड़ी हो गया ना, फाइबर हो गया, सल्फर, चारकोल. ओके. एंड सेकंड मटेरियल विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा? जैसे सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट. ठीक है. थर्ड होता है स्टेबलाइजर. स्टेबलाइजर कौन कौन से होते हैं? जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट ना. एंड एक और होता है, क्या होता है? एंटीसेटिंग. सो कंबस्टिबल मैटर होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्टेबलाइजर होता है, एंटीसेटिंग एजेंट होते हैं. एंटीसेटिंग एजेंट किस लिए काम में आते हैं? टू प्रिवेंट केकिंग. और फिफ्थ होता है सेंसिटाइजर, जो क्या होता है? मेटेलिक पाउडर. That classes are deep Hindi language, can't understand, upload English language, what? Brother, if the classes are in Hindi, I don't know about it. You should talk to the management about it, or the toll free number, or anything else, or comment on this, or raise your issue on the WhatsApp.
my task is to complete your AK Gorai. I will go slow. If you tell me that these topic are important, then I will take in the class one by one, 10 to 15 minutes, and I will cover it. ला आ जाओ, come to the 35 questions. Powder factor, it is easy. Okay. Okay, one of your friend has given the answer. Should I start to solve this question? Okay, so is I have suppose that you have a heading in the base which 4 meter width, height of the coal face is 2.5 meter, and the advance means you go heading आपकी, it will cut your face. This will this will form a cubic. So this is a 1 meter. For the volume, multiply 2.5, 4 and 1. Okay. So we have to find out the powder factor, na? So everybody should remember the powder factor formula, because it is important here. So powder factor will come in ton by kg. What is the formula? Coal production by explosive required. So coal production is the volume and density of coal divided by explosive. So how much it will come? 25 चौक 100 to 10 and कोयले की 1.5. Explosive given us 6 kg, na? So how much it will come? 15 by 6. But it is kilogram by kilogram, na? So 4 ton we multiply with, I have missed one property, water. Again I will show. Yes, you are right, Sayedji. The formula is specific gravity. So we will get 4 into 2.5 into 1
into 1.5 and density of water divided by 6. So it will come, when we multiply, it will come to 10, 1.5, and the density of water is 1000 by 6. So when we multiply, this is 15 into 1000 divided by 16. So it is kg by kg. So to convert it, write it ton. So 15 ton by 6 kg. So divide by 2.5 ton by kg. The delay interval is the short. Ravinder ji, if they will give us the dia of the hole, then we will find out if this type of example we will definitely solve. The diameter, if they given, we will find out the volume of that hole and multiply with the number of drill hole, and we will find out. Yeah, देखो, you should I told you, you should go and read 8 chapter, because in that chapter they have mentioned drilling, blasting and explosive, and we already covered in our chapter 1 of AK Gorai. But AK Gorai, they have mentioned few points which will help you to solve the question, but it will not help you to solve the theoretical question. So you should read this chapter at least for now. ठीक है. So the delay interval for the short delay detonator is 25 ms. Emulsion explosive. I told you, you go and read about explosive. Yes, for emulsion, this is the mixture of the two liquids. Okay, so ammonium nitrite present in every, and TNT तो नहीं होता है. TNT नहीं होता है तो वाटर होता है. TNT नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गया. गोर गम नहीं होता है, ये गम उसमें होता है, सलरी में होता है, ये सलरी में होता है. गम तो सलरी में होता है. एंड होलो माइक्रो बलून होता है. सो आंसर विल बी अमोनियम नाइट्राइट. इमल्शन में अमोनियम नाइट्राइट होता है, वाटर होता है, एंड होलो माइक्रो बलून. Okay. In the explosive AK Gorai, I have left 2 or 3 points. I told you that I will cover it later. So I left these points. Available explosive energy. What is available explosive energy? Energy that an explosive is able to deliver to do useful work. मतलब कि अगर मान लो ये एक्सप्लोजिव है, इसको ब्लास्ट करा तो कितना ब्लास्ट उसका यूजफुल हुआ, मतलब कितना ब्लास्ट में यूजफुल हुआ. 100% तो नहीं होगा ना. तो जितना वो ब्लास्ट में अपने लिए यूजफुल रहा, उसी को बोलते हैं हम अवेलेबल एक्सप्लोजिव एनर्जी. ठीक है. एक होता है एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ, AWS. एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ, AWS. व्हाट, ये थ्योरेटिकल एब्सोल्यूट है एनर्जी. ये प्रैक्टिकल वाला था, ये थ्योरेटिकल. दिस इज द थ्योरेटिकल एब्सोल्यूट एनर्जी अवेलेबल. सो AWS मतलब यू शुड रिमेंबर दैट थ्योरेटिकल वैल्यू है. जिस काल्पनिक चित्रण है, इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उस टाइप से. What is RWS? RWS means relative weight strength. अरे यार,
वो नहीं होते अपन रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसमें अपन क्या करते हैं, रो बाय मटेरियल बाय रो बाय वाटर, ऐसे कुछ करते हैं ना, तो उस टाइप से ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो बोल दे कि रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ निकालना हो आपको एक्सप्लोजिव का, अगर आपको रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ निकालना हो किसी एक्सप्लोजिव का, if you want to calculate relative weight strength, then you should know AWS of explosive and AWS of ANFO. It will help to find out RWS of explosive. Okay, and AWS क्या था, it is the theoretical absolute strength. ठीक है, फर्स्ट होगा दिस वन. सेकंड, इफ दे आस्क अस relative bulk strength, relative bulk strength रिलेटिव है, देन वो क्या होगा, ए बी एस बाई ए बी एस, ये एक्सप्लोजिव होगा एंड ए एन एफ होगा. ए बी एस क्या था, एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ. ए बी एस इधर एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ. तो अगर अपन एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव को एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एनओ से डिवाइड करेंगे तो हमको रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ निकल जाएगा. समझ में आया? अरे यार, अगर यहाँ पे आपको बल्क निकलना है ना तो इधर बल्क ही आएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये निकालना है वेट, तो इधर वेट ही आएगा. ये दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए. ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आओ. ये हो गया, ये हो गया. और एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ होता क्या है, अगर मान लो ये एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ आपको कोई पूछ ले कि एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ क्या होता है, तो एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ मतलब होता है जो आपका ए डब्ल्यू एस, मतलब थ्योरेटिकल जो वैल्यू थी, थ्योरेटिकल एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, उसको हम अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एबीएस निकलता है. यू शुड रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ, रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ. ठीक है, ठीक है. तो ये रहा क्वेश्चन, सोल्व दिस. फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के आंसर आ रहा है. शंकर जी has given already showed as a formula. Shankar Syed. Okay, I start because I have to go fast. 6 बजे से आप लोगों का क्लास भी तो होता है ना. देखो हमको यहाँ पूछा क्या है, ये आस्क अस बल्क स्ट्रेंथ ऑफ द बल्क स्ट्रेंथ. बल्क स्ट्रेंथ क्या होता है, आर बी एस, बल्क स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटिव टू एनएफओ. तो मतलब रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ पूछा हो, तो एक्सप्लोजिव इज क्या होता है कि अगर यहाँ बी है तो इधर भी ए बी एस ही आएगा. बाई ए बी एस इट इज एक्सप्लोजिव एंड ए एन एफ ओ इनटू 1000. यहाँ 1000 था ना,
सो एबीएस क्या था? थ्योरेटिकल वैल्यू। एबीएस बोलते हैं एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ। सो एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव को क्या लिख सकते हैं? AWS एक्सप्लोजिव इनटू डेंसिटी। तो AWS तो एक्सप्लोजिव का दिया है, कहाँ दिया है? ये रहा 1.285। सो 8500 दे रख 850 दिया है, 850 दिया है, एंड डेंसिटी ही हैज आल्सो गिवन। डेंसिटी कितना किया है? तो 1.2। सिमिलरली एब्सोल्यूट ऑफ ANFO, वो कितना होगा? सो AWS ऑफ ANFO इंटू डेंसिटी। AWS क्या था? 912 इंटू डेंसिटी 0.8। पुट इन योर फॉर्मूला। तो ये कितना आ जाएगा? 850 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 912 इंटू 0.8। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये तो सोल्व करना भी दिखाना ना आपको। इंटू 1.2, ये तो इजी है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 2 then cross this one 4 2 5, then simply divide it into 100. So 42500 divide by 129, the value will come. नहीं 850/9. Why we use specific relative when it is not in the formula? अरे भाई, what he has asked, इसने हमसे पूछा है बल्क स्ट्रेंथ, रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ABS/ABS। ठीक है। अब एज आई टोल्ड यू व्हाट इज द ABS मतलब होता है एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ। यहां बताया ना मैंने, एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ। एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ में क्या होता है? एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव। तो ये होता है एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ इनटू एक्सप्लोजिव, मतलब डेंसिटी। ठीक है रविंदर जी, इसलिए यूज करा है। क्या मैं ज्यादा चलती चला गया क्या? फॉर्मूला भी लिखा है ना भाई में कि एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ है, उसका मतलब ये होता है AWS रो। NFO है तो AWS NFO इंटू रो। ओके, तो थोड़ा आपको यार एक दो ट्रिक बता देता है जो आपको थोड़ा हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सोल्व करने में। डिविजिबिलिटी रूल, जब भी आप मैथ में पढ़ोगे ना, सो इन द डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट suppose that any number 925, how you will guess कि भाई इसमें किस किस का भाग जाता है? सो इन दिस नंबर सिस्टम you will read divisible by 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो I will show you दिस एग्जाम्पल। ओके, सो अगर मान लो कोई भी डिविजिबल बाय 2 है, कोई भी संख्या डिविजिबल बाय 2 है, so if the any number is divisible by 2, then the number, any number like 924, last digit should be divisible by 2, then the whole number will be
डिविजिबल बाई 2. दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का. ठीक है, अगर आपका 2 से डिवाइड जा रहा है लास्ट अंक में, तो उसको बोलेंगे हम कि ये 2 से भाग चला जाएगा. कभी कभी क्या होता है, बड़ी संख्या दी जाती है तो उसमें पता नहीं चलता है 3 का 9 का इनका भाग जाएगा ही नहीं जाएगा. वी डोंट नो द डिविजिबल बाय 3 और नो 9, लाइक 4 9 6 7 8 9 और 81. देन हाउ यू विल नो कि किस संख्या से काटे. सो 8 एंड सो in this you should know the divisibility rule, so it will help you in the examination to cut the number and make it shorter. So we have seen the divisibility of 2. For divisibility of 3, like take an example 81. Is it divisible by 3? So for divisibility by 3, you add the digits, like 8 plus 1 is 9. It will divide by 3. Yes, it is divisible. Takes 27. Is it divisible by 3? Yes. Why 7 plus 2 is 9, which is divisible by 3. Take 2, 3, 5. Is it divisible by 3? So we add all digit 2, 3, 5. So it will 10. Is it not divisible by 3? It is the divisible rule of 3. Then come to 4. If the last two digit of any number is divisible by 4, then the whole sankhya will be divisible by 4. 5 is the simple. 6 7 8. If the last three digit any number any digit, if the last three digit is divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8. Divisibility rule of 9. If you add the digits of the number and it's divisible by 9, then it will be divisible of 9. मतलब कि अगर सभी डिजिट को हम जोड़ेंगे, अगर उनमें 9 का भाग जा रहा है मतलब संख्या में जाएगा. जैसे एग्जांपल ये है ना 81. एग्जांपल इज 81. एड नंबर 8 plus 1, it will 9. It will divisible by 9. So ये संख्या डिविजिबिलिटी का 9. सो वो हेल्प करता है आपको कैसे कट करना है. जैसे कि ये वाली संख्या है, इसमें क्या करोगे आप. ये तो सिंपल था ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको भाग ही देना है. ठीक है, अब कभी भी आएगा तो मैं बता दूंगा कि डिविजिबल कैसे काटा जाता है बड़ी बड़ी संख्याओं को. जैसे ये वाली संख्या है ना, सो 9 1 10 10 12, so it will divisible by 3. So 3 3 9, 3 चौक 12, so 3 यहाँ से उड़ जाएगा. अंडरस्टूड. So we should know the divisibility rule, so it will help in our examination. So when any big number if come, we can cut it and make it shorter. Please comment if you anybody know. स्लोप फेलियर के लिए ब्लास्टिंग सिस्टम कौन सा सेलेक्ट किया जाता है. इट शुड बी प्रीसिपिटेटेड. ओके. The group of holes which are detonated on the first few delays are called. I told you, I explained you, if this is your face and this is your hole, cut hole. I explained you which is the cut hole, which the cut hole will blast first, then trimmers or dressers which
gives shape to our face. Okay, so the ratio of the length explosive column and the whole of diameter, the ratio of length of the explosive column and the whole of diameter, which will be the work as the spherical charges. For the spherical charges and the length of the explosive, L by D means explosive length of explosive by whole of diameter should be less than 6. You should know this formula. So अगर L by D should be less than 6, the ratio of the length of the explosive column to the whole diameter, the ratio should be less than 6. So please solve this question. Here L by D should be less than 6. So L is given or not? L not given, D is given 25, should be less than 6. L should be 150. It in which diameter? It will come in mm. He has asked us cm. सेंटीमीटर में पूछा है, to convert it centimeter divide by 10, so it will come centimeter. Whichever answer they will ask, write it. So you should know how to convert mm to cm, how to convert mm to meter. Okay, you should know. Incubation period, in what is incubation period? I already told कि कोल जब फर्स्ट बार एक्सपोज हुआ एंड उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने लगा, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इंक्यूबेशन पीरियड. तो उसके लिए क्या क्या चीज निर्धारित होगी? सपोज दैट if we are using the board and pillar method, so we make panels. So yes, panel affects करता है, तो ये अफेक्ट करता है. क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर, ये क्रॉसिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है. सीम थिकनेस, yes, seam thickness will be affect our incubation period. So which will not affect explosibility of coal dust. It will not affect. So it will be our answer. 44. Please. As today we are little bit slow today, so please do fast. Okay, so should I start? So production from the panel, what he has asked, whenever you try to solve the question, you should have to read what he has asked to solve us. Production from the panel per ton. So he has asked us production ton by day. Thick. So to find out the production per day, you should know he has given us. First I will explain how it works. Suppose this is your face, then this is the width, this is your depth,
This is width, this is height, and this is your depth. So it will create a cube or cubic, depend on the diameter, dimension. So where we were here. So production per day we have to find out. Then we should know the weight of coal, weight of coal in the panel for Deplery, है ना, divided by number of working days. ऐसा तो नहीं है ना कि 300 दिन काम चलेगा महीने में, कभी कभी बंद भी रहेगा. So how much is number of working days? So he has given us 6 month. 6 month तो टोटल महीना हो गया. And how many days? 25 days. So number of working days कितना हो गया? 6 month into 25. So इतना दिन काम हुआ. Okay, number of days. Then the weight of coal. Weight of coal. How you will find out? The volume of the coal. I told you the in this example. So volume कैसे निकलेगा? So volume कैसे निकलेगा कि multiply 3 meter and 20 meter. If this is given 25, pillar is 25, and the height will be 3. So one angle is also this one. So it will also 25. So 32 pillar है. How many pillar? 32. And the volume of the pillar. So how will number of pillar multiply by volume of pillar. One pillar ना. So कैसे निकलेगा वो कि number of pillar he has provided us 32. वॉल्यूम ऑफ द पिलर, वॉल्यूम ऑफ द पिलर कितना हो गया? 25 इंटू 25 इंटू 3 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वेट. तो इट इज गिवन एज 1.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 6 इंटू 25. सो सोल्व कैसे करेंगे? काट सकते हो, उसको काट लो. ट्राई टू मेक डिजिट 100, 10, 100 and 1000 when you try to multiply. So take 4 in this, so it will make take 4 and it will become 100. Okay, it will become 16. Easy. Okay, and this 25 will be cut it. 3 2 ja 6, 2 8 ja, and when we multiply it, it will become 8 into 140. I have made mistakes. Which mistake I have done? Okay, 16. So it will become 16 into 25 into 1.4. I left in down. It will become 4 into 14. We will get 560.
अगर मैंने फिर भी कोई गलती करी होगी ना, इफ आई डिड एनी मिस्टेक, जस्ट टुमारो आई विल एक्सप्लेन अगेन। मेथड यही है, ठीक है, सोल ऐसे ही करना है। We will take one example and 1, 2, 3, 4. Then I will explain this question and I will show you one, two video. Or okay, in this question he has given us द रोटेशन स्पीड कटिंग। देखो कभी भी क्या होता है, ड्रिल बिट जो होता है ना, ये ड्रिल बिट है। सो ड्रिल बिट है वन रोटेशन मोशन and one is cutting speed, cutting velocity. Cutting velocity, and this will be the diameter. Okay, so for this cutting velocity, the formula is 2 pi r into rotation speed. We can also write it pi d rotation speed. I am taking w. So this is your rotation speed. This is your diameter, and it is cutting capacity, cutting velocity. So cutting velocity will be, he has given us 71.50 pi, and diameter we have to find out. Is given us, so velocity देखो, cutting velocity and this is rotation, यहाँ लिख भी देता हूँ ना, rotation speed given us 350 and cutting velocity given us 3171.50. Diameter we have to find out. So how we will find out? So diameter equal to 71.50. We will divide by pi.
pi value is 22/7 and 350. So it is a meter per minute and it is rpm minute, है ना? So we have to change it minute. Why? Because he has said us, he told us to convert, give us answer in mm. So we will solve it. 71.50 multiply with 1000 divided by 22 multiply 7, 350. So this cut will 220. Now I told you ये वैल्यू क्या आ जाएगी 7150 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 22 35. ठीक है 5. So diameter in mm. 6.5 is in centimeter, not in mm. Multiply with 10, you will get your answer. सैयद जी ओके आज यहीं तक रुकते हैं एंड tomorrow I will take few tricks which will definitely help you in examination.